Question number 26. Question statement reads, a black body at 127 degrees centigrade radiates heat per unit area at the rate 20 calorie per centimeter square per second. At temperature 527 degrees centigrade, the rate of heat per unit area radiated by identical body of emissivity 0.7 in the same unit will be. This question is based on your Stefan's law. As per the Stefan's law, radiant emittance or amount of energy radiated per second per unit area or emissive power of a body is given by E is equal to E sigma T to the power 4, where E is the emissivity, sigma is the Stefan's constant and T is the absolute temperature. So in case of black body, E is equal to 1. ब्लैक बॉडी के लिए आपका E का वैल्यू होता है 1. तो पहला वाला केस ब्लैक बॉडी का है, तो पहला वाला बॉडी के लिए अगर इक्वेशन लिखते हैं तो E is equal to sigma temperature, it is 127 degree centigrade, so temperature is definitely 127 plus 273 Kelvin raised to the power 4, or that is equal to sigma 400 raised to the power 4. This is the equation 1. For the second body, the emissivity is given, let its radiant emittance is E dash. The emissivity is E is 0.7 multiplied by Stefan's constant into temperature is 527 degrees centigrade. So 527 plus 273 Kelvin raised to the power 4, or that is equal to 0.7 sigma, and this is 800 raised to the power 4. This is equation number 2. So now equation number 2 divided by 1. So E dash by E is equal to 0.7 800 divided by 400 raised to the power 4, or that is equal to 0.7 multiplied by 800 divided by 400 is 2, 2 raised to the power 4 is 16 multiplied by 16. So E dash will be 0.7 multiplied by 16 multiplied by 20 calorie per centimeter square per second, और इसको multiply करते हो it will be 224 calorie per centimeter square per second. So correct option is option number 2. Question number 27. Question statement reads, 3 rods of same cross section but different length and conductivity are joined in series. The temperature of the two extreme ends are 200 degrees centigrade and 100 degrees centigrade as shown in figure. The rate of transfer of heat H for the given system, all quantities are in SI system. Area is given 23 into 10 to the minus 2 meters square. So here look at the figure. The hot end is here and this is the cold end. So heat is transferring in this direction. And if you look at the heat current direction, these conductors are in series. So in series connection, like that of current electricity, effective resistance R series is equal to R1 plus R2 plus R3. The conductors have equal area of cross section in this figure. Solve this equation, then you get the thermal conductivity in series connection Ks is equal to sum of the lengths L1 plus L2 plus L3 divided by L1 by K1 plus L2 by K2 plus L3 by K3. ये दोनों फॉर्मूला आप लोगों को याद है. So here put the values. So L is 1 plus 2 plus 0.5 divided by L1 by K1 1 upon K plus 2 upon 3K plus 0.5 upon 2K. Then if you rearrange them, then this will be numerator is 3.5 divided by denominator will be 11.5 divided by 6K. So इसको rearrange करोगे 3.5 into 6K divided by 11.5. So thermal conductivity is given. So what is the heat current or rate of flow of heat? H is equal to K series into area into the temperature difference T2 minus T1 divided by the length. So here K series is given to you, that is 3.5 multiplied by 6K divided by 11.5 multiplied by area. Area is given 23 into 10 to the minus 2. Temperature difference 200 minus 100, that is 100, and the length is the total length from this point to this point, that is 1 plus 2 3 3 plus 0.5, that is 3.5. So here 3.3.5 cancelled, 11.5 23 ये हो गया 2, and if you rearrange the answer is your 12K. So correct option is option number 1. Question 28. Question statement reads, tea in a cup cools down from 70 to 60 in 10 minutes and 60 to 50 in 40 by 3 minutes. The temperature of the surrounding is nearly. So this question is based on Newton's law of cooling, and for Newton's law of cooling, if the temperatures are very close, then if the temperature falls from T1 to T2 in time delta T, the equation is T1 minus T2 upon delta T, this is the rate of cooling, is equal to proportionality constant K into average temperature T1 plus T2 by 2 minus the temperature of surrounding. This is the equation of rate of cooling. So you have two cases. First case is 70 minus 60 by 10
is equal to K into 70 plus 60, that is 130 by 2, 65 minus T naught. So if you rearrange, this is 1 is equal to K into 65 minus T naught. Now in the second case, the 60 minus 50 divided by 40 upon 3 is equal to K into 60 plus 50, 110 divided by 255 minus T naught. If I rearrange this, that is 3 by 4 is equal to K into 55 minus T naught. If you divide these two equations, this equation divided by this equation, 4 upon 3 is equal to 65 minus T naught divided by 55 minus T naught. Cross multiply them and rearrange, you will get T naught is equal to 25 degrees centigrade. So correct option is option number 2. Question number 29. Question statement reads, 20 gram ice at minus 10 degrees centigrade is kept into a calorimeter containing 20 gram water at 25 degrees centigrade. When equilibrium is reached, then calorimeter will contain neglect thermal capacity of the calorimeter. It based on principle of calorimetry, and ये यहाँ पे दो चीज़ों का मिक्सिंग, एक है आइस at a lower temperature than the melting point, और दूसरा है तुम्हारा वाटर above the melting point. यहाँ पे आइस का मेल्टिंग की बात आएगी, तो जहाँ पे भी चेंज ऑफ स्टेट की बात आती है, तो वहाँ पे आप लोगों को देखना है कि मेल्टिंग पॉइंट में चेंज ऑफ स्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर चेंज ऑफ स्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो रिजल्टिंग टेम्परेचर चेंज ऑफ स्टेट वाला टेम्परेचर ही होगा. अगर यहाँ पे ये वाली क्वेश्चन पे आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो रहा है तो रिजल्टिंग टेम्परेचर हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड देयर. तो उसको हमें चेक करना पड़ेगा. तो पहले हम चेक करते हैं कि व्हाट इज द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इट हैज 2 स्टेप्स. एक स्टेप होगा पहले -10 से 0 तक आएगा. सो पहले आइस को हम अगर -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं तो कितना हीट चाहिए होगा उसे. तो यहाँ पे -10 से 0 तक आइस से आइस तक जा रहा है, तो फॉर्मूला लगेगा आपका ms डेल्टा टी. और ms डेल्टा टी आप यूज करते हो तो मास इज 20 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 0.5 इंटू द राइज ऑफ टेम्परेचर इज 10, सो इट नीड्स 100 कैलोरी. तो आइस को -10 से 0 डिग्री लेने के लिए 100 कैलोरी चाहिए. अगर आइस को कंप्लीटली मेल्ट करना चाहते हो तो टू मेल्ट एट मेल्टिंग पॉइंट, उसको मेल्टिंग पॉइंट में मेल्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए होगा ना. फर्दर मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज करोगे तो मास है 20, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपका है 80 कैलोरी पर ग्राम, सो दैट इज 1600 कैलोरी इसे चाहिए. तो टोटल अगर 1700 कैलोरी मिलेगा तो आइस मेल्ट हो जाएगा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसको हीट देगा कौन, हीट जो हाई टेम्परेचर में वही देगा. तो हाई टेम्परेचर में जो सिस्टम है वो आपका 25 डिग्री पे है और वो लोएस्ट आते आते 0 डिग्री तक आ सकता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हम 0 डिग्री में चेंज ऑफ स्टेट चेक कर रहे हैं. तो मैक्सिमम हीट फ्रॉम वाटर जब वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएगा. तो यहाँ पे भी वाटर का कोई चेंज ऑफ स्टेट नहीं है, सिर्फ वाटर से वाटर आ रहा है. तो ms डेल्टा टी डायरेक्ट यूज करोगे तो मास इज 20, स्पेसिफिक वाटर इज 1 एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर हो गया 25. तो ये 500 कैलोरी हीट मैक्सिमम दे सकता है. तो हीट देने वाला है आपका वाटर, वो 500 कैलोरी देगा. उसमें से 100 कैलोरी देखो ऑलरेडी कंज्यूम हो गया टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम -10 टू 0. पहले -10 से 0 आएगा ना, -10 पे तो मेल्ट नहीं होता, 0 पे मेल्ट होता है. तो 0 आने के बाद ही मेल्ट होगा. तो 500 से 100 कैलोरी उसको -10 से 0 लाने में यूज हो गया. बचा कितना, तो हीट अवेलेबल फॉर मेल्टिंग, अवेलेबल फॉर मेल्टिंग. तो मेल्टिंग के लिए हीट अवेलेबल कितना रह गया ना, 500 कैलोरी मिला, 100 कैलोरी ऑलरेडी हो चुका खर्चा, तो 400 कैलोरी बचा. तो आइस मेल्ट कितना हो गया, तो कंप्लीट आइस देखो मेल्टिंग नहीं होगा. कंप्लीट आइस मेल्ट होने के लिए 1600 कैलोरी चाहिए, बट यहाँ पे सिर्फ 400 कैलोरी है, तो पार्शियली मेल्टिंग होगी. दैट मीन्स एट इक्विलिब्रियम ये देखो 25 से 0 आ चुका और ये -10 से तो 0 तक आ ही जाएगा, बिकॉज 100 कैलोरी मिल गया उसे. तो इसका कंप्लीट मेल्टिंग नहीं होगी, इक्विलिब्रियम में पार्शियल मेल्टिंग रहेगी. तो आइस मेल्टेड कितना होगा, तो जितना मिलेगा उसी के लिए मेल्ट होगा ना. तो आइस मेल्टेड तो आपके पास 400 कैलोरी है और पर ग्राम हमें 80 कैलोरी चाहिए, तो हमारा 5 ग्राम आइस मेल्ट हो जाएगा. तो फाइनली सिस्टम में कितना आइस रह गया, तो आइस प्रेजेंट फाइनली 20 ग्राम था, 5 ग्राम मेल्ट हो गया, तो हमारा 15 ग्राम रहेगा. वाटर कितना प्रेजेंट रहेगा, पहले 20 ग्राम वाटर था, अभी 5 ग्राम आइस मेल्ट हुआ तो 5 ग्राम वाटर बना, तो ये 25 ग्राम वाटर रहेगा. और एज आई डिस्कस्ड अर्लियर यहाँ पे मेल्टिंग इनकम्प्लीट हो रहा है, तो रिजल्टिंग टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा. और क्वेश्चन ने पूछा होता व्हाट इज द रिजल्टिंग टेम्परेचर
तो आंसर आपका 0 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे मिक्सर पूछा है फाइनली कितना होगा, एंड फाइनल मिक्सर हमने देखा कि वाटर रहेगा 25 ग्राम एंड आइस प्रेजेंट रहेगा आपका 15 ग्राम। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। Question number 30. Question statement reads: if in the experiment of resistance thermometer, resistance at melting point is 3.70, so R0 given है 3.70 ohm, and resistance at boiling point are 100, that is 4.81 ohm, and resistance at T degree centigrade is 5.92, RT is 5.92. Then value of the temperature in degree centigrade. So this is a simple formula based questions of thermometers. Formula is temperature is RT minus R0 divided by R100 minus R0 multiplied by 100 degree centigrade. So that is 5.92 minus R0 3.70 divided by R100 4.81 minus 3.70 multiplied by 100 degree centigrade. इसे कैलकुलेट करते हो तो न्यूमरेटर इज 2.22 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज 1.11 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसे कैलकुलेट करते हो तो ये होता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3।